We are live now. Hi everyone. So if I have to give a recap of whatever we have discussed in the last class, although it was not much, like in the last class we saw a brief history of Europe, how how it was, how the was the rise of the Western philosophy, the rise of logic with Aristotle, Plato, Socrates, etc. Then the spread of or the creation of mighty Roman Empire. Roman Empire was so great that even till date we give example of the cities of Rome. So Roman Empire, and then with the decline of Roman Empire, lost of all that great knowledge there, and then we saw a long period of about 500 years of dark ages, intellectual darkness, illiterate people mostly spending their time in the activities which are necessary for survival, because food itself is very scarce, the climate is very hard, and then slow rise of intellectualism or logic or critical thinking after 11th century. And in this 300 years, most of them about 11th century to 14th century. In 14th century, we will see the rise of Renaissance, the rebirth. 14th century से start करते हैं. So 14th century से Renaissance. After that, Enlightenment. Two things we will be reading in this chapter: Renaissance, Enlightenment, and then the birth of sociology. That's the agenda for the day. Uh, Still waiting for a few more people to join. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं. As I'm very clear about my timings, so next time से आदत डालो थोड़ा टाइम पे आने का. So this is book one of ESO 13, the sociological thought. As we have read or discussed in the previous class, that sociology emerged as a subject in Europe, and it emerged in 19th century. यूरोप में इमर्ज होता है और 19th सेंचुरी में इमर्ज होता है. Why? See, in any society, for rise of any kind of idea, there must be some social background. All of you are, we have discussed in some of the introductory classes. You decided to become an IAS. You are preparing for UPSC. Why? From where does this idea come कि UPSC का preparation करना है? Because of your material, from your material conditions. Middle class, spread of information. पहले in 2019 about 1,50,000 people, 2019 बोला, 2009-10 में about 1.5 lakh people have appeared in prelims. फॉर्म फिलिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, prelims में appeared हुए थे 1.5. So इन 10 years कितना होना चाहिए? डबल हो जाता, ज्यादा से ज्यादा ट्रिपल हो जाता. Now about 6 lakhs people are sitting in prelims. तो क्या हुआ है ये अचानक से ये renaissance about UPSC is coming from where? सबको सपना तो नहीं आ रहा है कि अब सबको यूपीएससी करना है, ऐसे बच्चे पैदा तो नहीं हो रहे हैं सोच के कि यूपीएससी करना है. What is it that forcing people to do this, or from where does this idea is coming? From the material conditions, from the society.
एस्पिरेंट्स जैसी वेब सीरीज बन रही है, कोचिंग्स वाले बहुत एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं. नाउ द नॉलेज हैज बिकम मच मोर एक्सेसिबल, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट व्हाट आई थिंक इज कोविड. कोविड प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कोविड के टाइम में लोगों को ये दिखा एक्चुअली कि because of what's the importance of civil servants. Even good people who are doctors, who are good engineers, they realize that money doesn't matter. The power that is enjoyed by civil servants. तो लोगों को रेमडेसिविर नहीं मिल रहा है, डीएम साहब यहाँ रेमडेसिविर अपने ऑफिस में रखकर बैठे हुए हैं, किसको चाहिए कितना बताओ. सो material conditions, the society, the social conditions give rise to ideas. So, what were those social conditions? What were those economic, political conditions which gave birth to this idea that we need a subject like sociology? और ये आया तो उससे पहले क्यों नहीं आया, उसके बाद क्यों नहीं आया, दूसरे कंट्री में क्यों नहीं आया? So this is the main theme of our discussion, and we will try to find the answer of this question. Why Europe? So, a rough idea, if you will draw a timeline of what was happening in Europe, तो after Dark Ages हम देखते हैं Renaissance, and after Renaissance we saw Enlightenment. Now this Enlightenment period was very important. In order to understand कि what changes came into this Enlightenment period, we first need to understand कि what was the society before Enlightenment. हम enlightened हो जाते तो क्या होता है, बुद्ध को enlightenment मिल गया, so his perspective changed what about the world. एक ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, तो वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन केम इनटू यूरोपियन सोसाइटी. बट in order to understand what changes came after enlightenment, we need to understand the past conditions in Europe. क्या हो रहा था, यूरोप at that time was feudal. फ्यूडल यूरोप था. फ्यूडल का मतलब क्या, देखो in this book whatever words are demarcated as a bold, if you go at the bottom of these PDFs, you will find the definition of those words. और ये काफी अच्छे definition है. These are one of the best definitions that you can find, and you should try to keep them in your notes. And while writing answers, you should try to use this language, exact definitions अगर लिख सको ना तो बहुत अच्छा है. क्या कहते हैं फ्यूडल सिस्टम? A system of tenure in agricultural areas whereby a vassal or serf served the landlord to whom the land belonged, and in return landlord allowed the serf to till his land and live on his land. कुछ समझ में नहीं आया होगा जिन्होंने अगर वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी है या फ्रेंच रिवॉल्यूशन नहीं पढ़ा है, तो थोड़ा समझते हैं फ्यूडल सिस्टम क्या है. ऑल ऑफ यू हैव आइडिया अबाउट जमींदारी. थोड़ा बहुत जमींदारी सिस्टम के बारे में पता है, हाउ दिस जमींदारी सिस्टम यूज्ड टू वर्क. You might have seen if you have some property at your in your village and all, हम क्या कहते हैं उसको बटाई पे दे देते हैं, हम बटाई पे दे दिया. कोई दूसरा खेती कर रहा है and they are paying some rent to the landlords, है ना. Landlords themselves are not going to tilt. या इंडियन रिवॉल्यूशन अगर पढ़ोगे, मॉडर्न फ्रीडम स्ट्रगल, तो यू विल कम अक्रॉस अ वर्ड कॉल्ड एब्सेंटी लैंडलॉर्डिज्म. लैंडलॉर्ड है वो खुद एब्सेंट रहता है, इज नॉट डूइंग एग्रीकल्चर हिमसेल्फ बट ही हैज अपॉइंटेड पीपल. तो फ्यूडलिज्म इज अ सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पे कि लैंडलॉर्ड हैज गिवन हिज प्रॉपर्टी, हिज लैंड to a tenant, to a farmer who is farming on behalf of this person. एक मिनट, एक स्लाइड दिखाता हूँ, तो स्लाइड नहीं, I will send these notes to you. These are the notes that I had made during my preparation. तो वर्ल्ड हिस्ट्री के नोट्स थे,
and you can get a rough idea that how you can make your notes. वो notes यूपीएससी के ना बहुत डिटेल्ड नहीं होने चाहिए कि तुमने सब कुछ लिख लिया है उसमें. यू हैव लाइक आई सॉ सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे कॉपी द होल बुक इन देयर नोट्स. ऐसा नहीं करना है. तो फ्यूडलिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं. इट्स अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी. सिंपल. अगर मुझे आएगा क्वेश्चन फ्यूडलिज्म पे लिखने के लिए, मैं सीधा लिखूंगा इट्स अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी which existed during 600 to 1500 AD और CE. फ्यूड. फ्यूड का मतलब क्या होता है? कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड. एज वी डिस्कस्ड, जमींदारी में क्या होता है? यू आर नॉट एन ओनर ऑफ द लैंड, यू आर अ कंडीशनल ओनर. कुछ टाइम के लिए आपको दे दिया जाता है लैंड. तो फ्यूड का मतलब होता है कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड. नाउ व्हाट वाज हैपनिंग इन दिस फ्यूडल सोसाइटी? This social, this society was divided into rigid classes. Rigid classes. मतलब क्या हुआ? देखो, in this feudal society, society was divided into three main groups. You can say, at the top was the elite class, or you can say the king and the clergies. सबसे टॉप पे बैठे हुए थे राजा और चर्च के जो हाईएस्ट अथॉरिटीज होते थे, क्लर्जीज जिनको बोलते हैं. So king and the clergies were at the top. All the property in the realm, in the kingdom, is owned by the king. तुमने सुना होगा, अगर कुछ मूवीज देखे होगे या वर्ल्ड इंडियन हिस्ट्री पढ़ोगे तो एवरीथिंग इन एन किंगडम इज ओन्ड बाय द किंग. राज्य में जितना कुछ भी है वो राजा का ही है. सिंपल. लैंड, प्रॉपर्टी, एवरीथिंग. किंग कैन टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीवन एनी डे. There's nothing personal in a kingdom. तो इस फ्रेंच सोसाइटी में भी या यूरोपियन सोसाइटी में भी देयर वर किंग्स एंड दे हैव द एब्सोल्यूट ओनर ऑफ एवरीथिंग, ओनरशिप ऑफ एवरीथिंग. लेकिन दिस किंग्स दे कैन नॉट कंट्रोल द होल रीजन. जैसे इंडिया में मान लो अकबर है, मुगल है, तो मुगल्स वेर बाय डिफॉल्ट ओनर ऑफ एवरीथिंग. बंगाल भी उन्हीं का है, और बंगाल में ऐसा नहीं, बंगाल पूरा उनका है. वट एवर रीजन दे वांट दे कैन कैप्चर, वट एवर दे वांट टू गिव टू समवन दे कैन गिव, सेल, बाई, कुछ भी कर सकते हैं वो. तो बंगाल हो, अवध हो या कुछ भी, जब मुगल है तो सब मुगल का है. पीपल वर जस्ट गिवन द लैंड टू बी एबल टू सस्टेन. आप किसान अगर पढ़ोगे हिस्ट्री तो मुगल पीरियड में किसानों की क्या हालत है? द कंडीशन ऑफ द फार्मर्स, दे आर जस्ट growing the food to sustain themselves. Whatever surplus is there, whatever extra is left after their consumption, and sometimes even more than what they need or more than what they should be left, वो भी राजा टैक्स में ले लेते हैं. सस्टेनेबल भी कई बार मुश्किल, सस्टेनेबिलिटी भी कई बार मुश्किल है फार्मर्स के लिए, बिकॉज द लैंड इट्स सपोज टू बी बिलोंग टू द किंग. Similar situation is here. The king is the owner of all the lands, property, everything which is there. But king cannot control everything on its own. जैसे कि मुगल क्या थे? They could not have control everything on their own. तो बंगाल में प्रोविंस बना दिया, वहां किसी को स्टैब्लिश कर दिया, किसी को डेक्कन भेज दिया, किसी को अवध में बिठा दिया. एवरीवेयर दे हैव देयर ओन नवाब्स, है ना, छोटे छोटे नवाब. वैसे ही दिस किंग in the European society will have nobles. तो ये एक्चुअली नॉबल्स, दे आर, और इनको वेसल्स कहते थे. व्हाट हैपन टू अ वेसल? वेसल क्या करता है? वेसल होल्ड समथिंग, है ना. वेसल, पानी रख दो उसमें, सामान रख दो, वेसल होल्ड समथिंग. सो दिस नोबल और वेसल, ही इज होल्डिंग what? Holding the land
of the king, holding the land of the king, but the holding is conditional. क्या condition है कि whenever the king will go to a war, whenever when and there will be any danger to the king, this vessel will provide the resources, army, money, whatever, to the king. और जब तक वो लॉयल रहेगा, till the day he is loyal to the king, he can have he can hold this land. तो ट्रू ओनर तो किंग होता था, लेकिन फॉर all the practical purposes, this vessel will treat this land as his own. ये जनरेशन बाय जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को मिलता जाएगा, तो he will treat it like his own. Now this vessel himself is also not an actual farmer. He will give now to another group of people. They were known as serfs. इनको क्या बोलते थे? Serfs. ये एक्चुअल पीजेंट्स है, एक्चुअल फार्मर्स हैं. एंड these serfs, they are tied to the vessels. वेसल जो बोलेंगे वही इनको करना है. If they have to use, they have to tilt on the land that vessels will decide. They have to grow the crops that vessel will decide. काफी कंट्रोल है. और हमने क्या पढ़ा कि दिस सोसाइटी हैज रिजिड क्लास सिस्टम. दिस वेसल कैन नॉट ज्वाइन एरिस्टोक्रेटी. ये किंग नहीं बन सकता है, ये किंग की फैमिली को ज्वाइन नहीं कर सकता है, ना ही वो कभी सर्फ बन सकता है. ऐसा नहीं हो कि ही विल फॉल डाउन एंड बिकम अ सर्फ. दिस सर्फ, नो मैटर हाउ गुड ही इज, he cannot become a vessel, he cannot become an actual land owner. जैसे हमारे यहाँ आज की सोसाइटी कैसी है, अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास. Once you give the exam, you crack this exam, and you suddenly, from lower class you can come to upper class, from middle class you can go to upper class. If you lose everything in your business, you can come from upper class to middle class, and from middle class to lower class. So this society is fluid. यहाँ पे मूवमेंट है, आप मोबाइल है, ऊपर नीचे जा सकते हैं, फ्रीडम है आपके पास. डिपेंडिंग अपॉन योर कैपेबिलिटीज एंड ऑल, यू कैन मूव अप एंड डाउन. बट इन दिस फ्रेंच सोसाइटी, it has a rigid class structure. Nobody can go up, nobody can come down. राजा कुछ भी करे, राजा राजा ही रहेगा till the day he will die. ठीक है. So second point I think is clear. ये क्लियर हो गया कि सोसाइटी इज रिजिड एंड कंडीशनल ओनरशिप ऑफ लैंड. ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए अपने. थर्ड इज देयर इज नो सेंट्रल अथॉरिटी. इस सिस्टम में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है, बिकॉज किंग इज सोली डिपेंडेंट अपॉन हिज वेसल्स. किंग बहुत स्ट्रांग नहीं है. थिंक अबाउट द मुगल एम्पायर ऑफ द लेटर डेज. जब बहादुर शाह जफर वगैरह के टाइम के मुगल्स के बारे में सोचो, कैसा इंडिया है उस टाइम पे. डज इट हैज अ सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी? मॉडर्न हिस्ट्री ऑल ऑफ यू हैव रेड अ लिटिल बिट, थोड़ी बहुत कहानी तो सुनी होगी. सो द लेटर मुगल्स, वो क्या है, सेंट्रल अथॉरिटी है वहां या नहीं है? व्हाट डू यू थिंक? देयर इज अ सेंट्रल अथॉरिटी और नॉट? नहीं है, राइट? बिकॉज ऑल दीज स्मॉल स्मॉल किंगडम, स्मॉल स्मॉल नवाब्स, बंगाल, अवध, they have all become very powerful, and in fact they have become more powerful than the Mughals. Okay, similar situation is here. These vessels, because they have the actual power, इन्हीं के पास मिलिट्री है, लड़ने जाना है, तो दे आर कंट्रोलिंग ऑल द पीपल. यही सर्फ्स तो मिलिट्री बनेंगे. तो दे हैव द मसल पावर, they are directly collecting the taxes, so they have the money power. These vessels also have the support and loyalty of their serfs. तो अगर राजा किसी वेसल को जबरदस्ती हटा भी दे,
Can I? You will not be there, and I will bring someone else. Even in that situation, the people will not follow the other vessel. So here we have a lack of. There is no central authority. King is only there in legal terms कि राजा है, but power actual नहीं है उनके पास. Economy is based in village and land was source of power. इकोनॉमिक एक्टिविटी के नाम पे इस सोसाइटी में क्या हो रहा है? एग्रीकल्चर. देयर इज नथिंग एल्स. वट एवर यू कैन ग्रो, दैट्स द मेन सोर्स ऑफ ऑल द इनकम. Vessels are generating money from collecting rent. The economy is based in village, and whosoever has a land will be the most powerful person in this society. Little surplus. अच्छा, अगर ये बात तुम्हें समझ में आ गई तो अच्छा है, नहीं तो लेट मी गिव एन एग्जांपल. लैंड वाज सोर्स ऑफ पावर. व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर टुडे in our society? What is the source of power? Bolo. Who is more powerful? Money. Money. कह सकते हैं money is the source of power if you have the capital. Political connection. Who is more powerful? मोदी जी के अकाउंट में बहुत पैसा नहीं होगा, उनसे बहुत सारे अमीर अमीर बिजनेसमैन होंगे, बट हु इज मोर पावरफुल? अंबानी की बात छोड़ देते हैं. तो पॉलिटिक्स, political power is very important nowadays, huh? In democracies and in this system, political power, if you have the political power, तुम किसी भी डिस्ट्रिक्ट में हो. हम शायद स्टोरी सुना भी रहे थे कुछ दिनों पहले. So your the salary of our DM is 1,30,000, 40, 50, depends upon कि how senior and where you are. तो 1.5 लाख रुपए मान लो एवरेज तुम्हारी सैलरी है. And a businessman earns 1.5 lakh, 1.55 lakh rupees a day. But still, who is more powerful? कुछ अगर काम हो उस डिस्ट्रिक्ट में तो 1.5 लाख रुपए डेली कमाने वाला भी विल कम एंड आस्क यू कि मे आई कम इन सर, एंड यू विल अलाउ हिम टू सिट ऑन योर चेयर, एंड देन वो भी हाथ जोड़ के खड़ा होगा अगर उसको कुछ काम हो जाए तो. सो इन आवर सोसाइटी पावर हैज बीन डिवाइडेड इन वेरियस वेज, वेरियस फील्ड्स. बट उस टाइम पे क्या है? पावर इज जस्ट इन वन थिंग. इफ यू हैव लैंड यू हैव पावर. Little surplus for trade. Whatever these people are producing now, production method, productivity is so low that whatever they are producing, either they are consuming themselves, और जो भी थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बचता है, all of that is taken as tax by the vessel. So if you will think about this in present, what's happening in present day India, land is divided into small पीसेस. हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग जो है, व्हाट इज द एवरेज एग्रीकल्चरल लैंड होल्डिंग इन इंडिया? पता है किसी को? 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं: मार्जिनल, स्मॉल, लार्ज फार्मर्स, मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स. तो मोस्ट ऑफ द अबाउट 80% पीपल इन इंडिया विल फॉल इनटू मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हु हैव लेस देन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, 2 एकर्स ऑफ लैंड. तो जिसके पास 2 एकड़ से भी कम जमीन है, वो क्या कभी सरप्लस प्रोडक्शन कर सकता है? इवन इफ इज अ फैमिली ऑफ 5 people, he will grow just enough food to survive himself for a year. If he will not produce more than his own survival, then he will not be able to sell those things. So if he is not able to sell, there will be no market, there will be no economic activity as such, है ना? तो इस पीरियड में क्या हो रहा है? ऑल्दो दे हैव बिग पीसेस ऑफ लैंड, but whatever they are producing, everything is taxed by these vessels. जैसे कि अभी सोच लो,
मोस्ट ऑफ यू आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, तुम्हें सैलरी मिले, तुम आईएएस बन जाओ और तुम्हें सैलरी मिले 1.5 लाख रुपए, और गवर्नमेंट बोले कि ऑल द आईएएस ऑफिसर्स हैव टू पे अ टैक्स ऑफ 1,30,000, तुम्हारे हाथों बस 20 हजार बचेगा, तुम क्या करोगे? यू विल जस्ट बाई द बेसिक थिंग्स, यू विल नॉट स्पेंड इट, और तो पूरी इकोनॉमी बहुत स्मॉल होकर रह जाएगी, है ना? तुम पहले एसी खरीदते, कार खरीदते, अब कुछ नहीं खरीदोगे, जस्ट रोटी दाल कैसे भी चल जाए। तो यही वाला सिस्टम है यहाँ पे, बिकॉज ऑफ हाई टैक्सेशन and low productivity, both regions are there, surplus is very less, and that's why there is no trade as such, कोई बड़ा मार्केट, बड़ा टाउन तुमको देखने को नहीं मिलेगा। जबकि हमने देखा कि इससे पहले जब रोमन एम्पायर था, so they have so much surplus, or they have so much demand, कि think they were buying things from far away countries like India, and they were selling things to India. So वो सब अब खत्म हो चुका है यहाँ पे। This society has degraded, it has gone back. And then the last point is serfdom. Serfdom, as I explained, these serfs, there will be vessels and there will be serfs who are attached to their vessels. जो बोलेंगे, जहां जाने बोलेंगे वहीं जाना होगा। Even this, the life of these serfs are such that they cannot even stop farming. जो मूवीज वगैरह में देखा होगा तुम लोगों ने, तो वो बोले कि हम नहीं करेंगे, वो भी नहीं कर सकते। जैसे ब्रिटिशर्स के टाइम में लगान मूवी देखी होगी तो, जो, या फिर यू मस्ट हैव रेड अबाउट चंपारण और नील सत्याग्रह, इंडिगो रिवॉल्यूशंस। सो वहाँ क्या हो रहा है कि जबरदस्ती तुम्हें नील की खेती करनी ही पड़ेगी। तो सच सिचुएशन इज देयर, you cannot even say कि no, no, I will no longer tilt your fields, you have to. So this is the system of serfdom. Now, मोनू पूछ रही है कि बट सर लैंड कम अंडर द किंग। लैंड, जैसे मैंने बताया कि लैंड कम्स अंडर हिम बट जस्ट इन द नॉमिनल सेंस। रियल पावर, रियल टैक्स कौन कलेक्ट कर रहा है? सॉरी, वेसल्स। उन वो ज- अगर अगेन कंपेयर इट टू द इंडियन सिचुएशन, रियल पावर है नवाब के हाथ में। वो लास्ट लास्ट तक, इवन टिल द वेरी लास्ट, दे आर सेइंग कि व्हाट एवर डिसीजंस वी आर टेकिंग इट ऑन द नेम ऑफ द मुगल एम्पायर। 1857 के रिवॉल्यूशन के टाइम पे कह रहे हैं कि मुगल्स ही हमारे किंग होंगे, बट एक्चुअली ऑल द पावर इज इन देयर हैंड। कितना टैक्स लेंगे? बात बात तो बंगाल वालों ने टैक्स भेजना तक बंद कर दिया मुगलों को। तो ऐसी स्थिति आए है, देयर इज नो फिक्स्ड टैक्स एज सच। किंग जबरदस्ती मांग भी नहीं सकता है, वो ट्रिब्यूट चलता था, टैक्स नहीं चलता था। देखो ऐसा सिस्टम है, किंग, वेसल एंड सर्व्स। तो वेसल इज लाइक दे विल ड्रेन दिस सर्व्स ऑफ एवरीथिंग, जितना है उतना इनसे सक कर लेगा ये। लेकिन व्हेन ही हैज टू गिव द मनी टू द किंग, ही विल नॉट गिव। यहाँ पे टैक्स का कोई फिक्स, यहाँ पे एक फिक्स रेट रखेगा कि तुमको 50% तो मुझे देना ही पड़ेगा, 60% देना ही पड़ेगा, बट इन दिस केस देर इज नो टैक्स। यहाँ पे देते थे ट्रिब्यूट। राजा बुलाएंगे साल में 2 बार, आ जाओ भाई मिलने, तो जाएगा तो कुछ लेकर चला जाएगा, ठीक है मिलने जा रहे हैं, राजा को कुछ दे दिया। सो ट्रिब्यूट, नो टैक्सेशन एज सच कि यू हैव टू गिव दिस मच परसेंट टू मी, एंड दैट्स व्हाई द रियल पावर इज इन द हैंड ऑफ वेसल्स। समझ में आया मोनू? तो यही मैंने यहाँ लिखा है, वीक किंग्स एंड स्ट्रॉन्ग फ्यूडल लॉर्ड्स। यहाँ नेक्स्ट पॉइंट क्या है? अनरीचेबल, अनब्रीचेबल हरार्किकल सिस्टम। हरार्किकल सिस्टम जो है, अरेंजमेंट, वेसल, सर्व्स, वेसल्स एंड लॉर्ड और किंग, ये सिस्टम इज अनब्रीचेबल,
No soft, no matter how intelligent you are, no matter how strong you are, if you are a son of a serf, you will always remain a serf. If you are a son of a vessel, no matter how idiot you are, you will always remain a vessel. And similarly, it goes for the king. So this hierarchy is unbreachable. जैसे इंडियन कास्ट सिस्टम को समझ सकते हो, नॉट ऑफ प्रेजेंट टाइम बट मिडिवल टाइम का जो कास्ट सिस्टम है कि नो मैटर व्हाट यू डू यू विल ऑलवेज बी सीन एज अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द लोअर रंग्स. तो अनब्रिचेबल hierarchical सिस्टम है एंड द होल society was bound by the couplets of command. Couplets of command, as I told you, king and vessel के बीच में जो रिलेशनशिप है, इट इज बाउंड बाई couplet of command. Whenever king will call, vessel will respond. तो कसम वचन खाया है, ये वचन के ऊपर ही पूरा सिस्टम चल रहा है. He has placed his loyalty to the king. तो तुम नाइटहुड अगर तुमने अगेन मूवीज वगैरह देखी होगी, so might have seen this कि they will bow down and they will say कि मैं आपका कसम खाता हूँ, या कटप्पा बाहुबली वाला सीन याद आ रहा होगा तो कि no matter what happens, कटप्पा is always loyal to बाहुबली or his father. So ये है couplets of command कि once I have taken the place, I will give my life for you, no matter what. So in this society, the pledge, the loyalty is a very important thing. People are ready to give their life for loyalty. और ग्रेजुअली क्या होता है, ये hierarchy becomes hereditary. पहले ये वेसल्स बनते कैसे हैं, पहले ये कोई किंग होगा एंड देयर विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग गुड फाइटर, तो इसको वो बना देगा वेसल कि ठीक है, यू यू कमांड दिस आर्मी एंड यू हेल्प मी इन द वॉर वगैरह वगैरह. और फिर ये वेसल क्या करेगा नेक्स्ट, he will pass on his vassalship, his empire to his son, and to his son, and to his son. So this hierarchy will become hereditary, will pass from one person to another. Sonali is saying कि vessel can be changed by the king or not. क्या लगता है तुम लोगों को? I think I explained this, but let us see. क्या होगा? Vessel can be changed by the king or not? बताओ, कौन बताएगा? Yes. Can be changed but people will not accept, and that's why it was almost unchangeable. वो चेंज करना जाएगा तो कितने लोगों ने वो देखे कौन सा वेब सीरीज था, गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है किसी ने? तो गेम ऑफ थ्रोन्स, इट स्टार्ट्स विथ द सीन ना कि वो उधर से आता है और उसको अचानक से हटा देते हैं, और हटा देते हैं तो पूरा रिबेलियन हो जाता है, पूरा नॉर्थ जो है वो रिवोल्ट कर देता है अगेंस्ट द किंग. याद आ रहा है सीन? इट्स द वेरी फर्स्ट एपिसोड, ही कम्स एंड ही वाज किल्ड. तो वेसल को अगर हटा दोगे तो देयर विल बी रिबेलियन, पीपल विल रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग हिमसेल्फ. ऐसे हटा तो सकते थे बिकॉज लीगली द लैंड वाज देयर, किंग का लैंड है. तो ये है फ्यूडल सोसाइटी जो एग्जिस्ट कर रही है यूरोप में. अब अपने वापस ESO 13 पे आते हैं, लेट्स गो बैक वेयर वी वर. सो वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द अमेरिकन सोसाइटी प्री एनलाइटनमेंट. और क्या क्या फीचर्स हैं इस सोसाइटी के, इस प्री इनलाइटेंड सोसाइटी के? इट वाज अ फ्यूडल यूरोप. ये हम समझ गए कि फ्यूडल यूरोप से अपना क्या मतलब है. बट enlightenment introduced a new way of thinking and looking at reality. Enlightenment में चलते लोग अलग तरीके से सोचने लगते हैं. People started asking questions. Before this, people used to believe whatever the church will say, whatever the king will say. Nobody was challenging.
the authority of the king. But for the first time during Enlightenment, people started questioning the authority of the king or the church. Enlightenment के टाइम में एक जो बहुत फेमस आइडिया इमर्ज होता है विच ऑल ऑफ अस टेक्स ग्रांटेड, हमें कहते हैं कि ह्यूमन बी दिस आइडिया इमर्ज दैट ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल। इसका मतलब क्या हुआ? ह्यूमन बीइंग्स आर रैशनल। एनीवन? व्हाट डू मीन बाय रैशनैलिटी? रैशनैलिटी का मतलब क्या होता है और रैशनल का मतलब क्या होता है? ये बता देंगे। रीजनिंग पावर, कोई रीजन होना चाहिए किसी भी लॉजिक, एनालिसिस की कोई रीजन होना चाहिए किसी भी लॉजिक के बिहाइंड। ठीक है, सो वी हैव गॉट टू वर्ड्स, लॉजिक एंड रीजन। एनीवन एल्स? हाउ कैन यू डिफाइन रेशनैलिटी? नहीं, ट्राई करो, ट्राई करो, ट्राई करने में कुछ नहीं आता। वट एवर इज कमिंग टू योर माइंड, इट विल जस्ट ऐड टू द डिस्कशन। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, एक बार जाके डिक्शनरी में देखना रेशनल क्या होता है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट याद रखने की कोशिश करो, वेन एवर यू थिंक अबाउट रेशनैलिटी दिस विल हेल्प यू अलॉट। क्योंकि रीजनिंग लॉजिक सोच के ये और ही अपने आप में और कंफ्यूजिंग टर्म्स है कि देन व्हाट इज रीजनिंग एंड व्हाट इज लॉजिक। सो द सिंपल आइडिया ऑफ रेशनैलिटी इज कि व्हेन यू अडॉप्ट द मीन्स which will help you in achieving your ends। तुम्हें अगर दिल्ली जाना है तो तुम दिल्ली की ट्रेन में बैठते हो, न कि कोलकाता की ट्रेन में। तुमको ईस्ट जाना है, तुम ईस्ट की गाड़ी पकड़ो, वेस्ट की मत पकड़ो। वेस्ट जाना है, वेस्ट की पकड़ो, ईस्ट की मत पकड़ो। यही है रैशनैलिटी। यू डू द थिंग्स एज पर योर एंड्स। इन रैशनैलिटी वी डू नॉट क्वेश्चन द एंड कि तुमको दिल्ली क्यों जाना है, वो बात नहीं है। अगर तुम्हें दिल्ली जाना है तो तुम दिल्ली की ट्रेन पकड़ो। अगर तुम्हें आईएएस बनना है तो तुम पढ़ाई करो, यू ज्वाइन अ कोचिंग, यू रीड फ्यू बुक्स। सो ये रैशनल काम है। बट पहले क्या करते थे, व्हेन पीपल वर नॉट रैशनल, तो तुम बोलोगे सर ये हमेशा से लोग ऐसे ही करते होंगे। कब लोग ऐसा नहीं करते थे? व्हेन पीपल वर नॉट रैशनल। हमारे लगता है कि रैशनल होना तो मतलब दैट्स द वे ऑफ लाइफ, ऑल ऑफ अस आर रैशनल इन दैट वे, है ना? We took it as a pre-given thing, but actually rationality was not always there। पहले लोग क्या करते थे, बारिश, खेती करना है तो भगवान की पूजा करेंगे कि भगवान वो टाइम से हल चले या ना चले, भगवान की पूजा अच्छे से होनी चाहिए। So if somebody has some disease, so they will not think about कि इसका क्या साइंटिफिक प्रॉब्लम क्या है इसको। दे विल रिलाई ऑन द गॉड्स कि अरे पुनर्जन्म का कुछ अभिशाप होगा इसको। तो वहां पे लोग रैशनल काम नहीं कर रहे हैं। होना कुछ और चाहिए, कर कुछ और रहे हैं। मीन्स और एंड्स में सिमिलैरिटी नहीं है, गोल इंटरट्विन्ड अलाइंड नहीं है, तो वो नॉन रैशनल काम है। रैशनल काम क्या है कि यू नो कि व्हाट यू हैव टू डू एंड यू टेक योर एक्शन एज पर दैट। ठीक है, समझ में आई रही बात? रैशनैलिटी अब समझ में आ गया क्लियर एक कॉन्सेप्ट। रैशनैलिटी क्या है? मीन्स एंड एंड्स दोनों अलाइंड है तो आप रैशनल हो। अगर आपके मीन्स और एंड्स अलाइंड, मीन्स मतलब आप कौन सा रास्ता अपनाते हो, एंड्स मतलब आपका गोल क्या है। अब वो गोल तक पहुंचने के लिए अगर आप सही रास्ता चुन रहे हो जो जस्टिफाइड रीजनेबल रास्ता है,
तो आप रैशनल हो। तो रैशनैलिटी यूरोप में इस टाइम पे राइज करती है, और लोग ये मानते हैं कि देखो ह्यूमंस आर इसेंशियली रैशनल, हम सब रैशनल हैं, एंड बिकॉज वी आर रैशनल, बिकॉज वी कैन फिक्स अ गोल एंड वी कैन रीच देयर, तो ये कहते हैं कि वी कैन ऑल्सो बिल्ड अ रैशनल सोसाइटी, हम सोसाइटी रैशनल बना सकते हैं। सो इफ वी कैन थिंक ऑफ अ डेवलपमेंट, वी कैन एक्चुअली डेवलप, we can put effort to develop, and then they realize कि human beings have infinite potential, हम कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। So एक लाइन जो याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन विच विल हेल्प यू अलॉट इन एग्जाम्स, इसलिए इसको मैंने थोड़ा डार्क हाईलाइट किया है, इसको पढ़ो। न्यू आउटलुक डेवलप as a result of commercial revolution and scientific revolution. I think it is visible to all of you. New outlook developed. Yes. New outlook developed as a result of commercial revolution and scientific revolution. ये जो न्यू आउटलुक हम देख रहे थे ना, लोग रेशनल हो गए, ये सोचने लगे कि वी कैन ऑल्सो डेवलप, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द अथॉरिटी, दिस न्यू आउटलुक, दिस डेवलप्ड because of commercial revolution and scientific revolution, and it got crystallized during French and Industrial Revolution. ये क्रिस्टलाइज कब होता है? फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में। Now, what is the meaning of crystallization or crystallized? When we say crystallize, का क्या मतलब हुआ? In general term, social society sociology या ऐसे normally जब हम कहते हैं कि something is crystallized, what does this mean? Solidified. Very good, वीर प्रताप। क्या होता है? हम नॉर्मली चीनी खाते हैं ना सब, so if you leave sugar to get cold, it will crystallize. So the sugar that we eat is sugar crystals, है ना, छोटे छोटे दाने दाने crystals है वो। So when anything get crystallized, it gets a form structure, है ना, उसका स्ट्रक्चर एक फिक्स हो जाता है कि वो ऐसा ही रहेगा, फिक्स हो जाता है, सॉलिडिफाइड हो जाता है। तो कहते हैं कि ये न्यू आइडियाज जो थे, न्यू आउटलुक जो थे, they developed as a result of commercial and scientific revolution, but they crystallized, they actually got crystallized, strengthened, fixed in the mind of the people during French and Industrial Revolution, and this gave birth to sociology as a discipline. एक ही स्टेटमेंट में पूरा चैप्टर है ये। कमर्शियल और साइंटिफिक रिवॉल्यूशन नया आउटलुक देते हैं, और फ्रेंच एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसको क्रिस्टलाइज कर देते हैं। ए सिंपल क्वेश्चन कैन बी हियर, एक टेल वर्ड यहाँ डायरेक्टिव यूज कर दें, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन। Commercial and scientific revolution gave new outlook, and French and industrial revolution crystallized it. यही पढ़ना है अपने को। तो पहले एक बार देख लेते हैं स्ट्रक्चरल चेंज इन यूरोपियन सोसाइटी, क्या चेंज आया यूरोपियन सोसाइटी में। Some of it we have already discussed. So old Europe was traditional, land was central to the economic system, classes were distinct and clearly demarcated, as we said, classes were rigid. The religion formed the cornerstone of the society. Cornerstone का मतलब क्या होता है? In the last class, someone asked me, he said, what is the meaning of a cornerstone? Is the meaning of cornerstone, by the way? Anyone? The religion formed the cornerstone of the society. Cornerstone क्या होता है? काफी मिसनोमर टाइप का वर्ड है ये। हाँ, सेंट्रल आइडिया, मतलब कुछ लोग ऐसे कंफ्यूज जाते हैं, कॉर्नर स्टोन मतलब कॉर्नर में रखा हुआ है क्या, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वाइट अपोजिट टू दैट, कॉर्नर स्टोन मीन्स द सेंट्रल आइडिया।
तो रिलीजन जो है वो कॉर्नर स्टोन हो जाता है सोसाइटी का। मेन आइडिया जो है सोसाइटी, एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड रिलीजन। एज वी सेड, कोई बीमार पड़ गया तो रिलीजन, खेती करना है तो रिलीजन, कहीं जाना है तो रिलीजन, नौकरी करनी है तो रिलीजन, नहीं करनी है तो रिलीजन, एवरीवेयर रिलीजन, शादी में रिलीजन, डिवोर्स में रिलीजन। So religious ideas decided what was moral and what was not. Family and kinship was central to the lives of the people. What people were living for. The one idea, one principle because of which people were living is their family and kinship. Kinship is extended family. तुम्हारे चाचा, ताऊ, मामा, दादा, उनके कोई रिलेटिव, it becomes whole kinship. तो अभी भी देखो, in village, the societies, the families which have not been able to develop as per the Western standards, तो क्या होगा? For them, family and kinship is very important. तो वो कहेंगे, करे तू लव मैरिज करेगा तो तुम्हारे चाचा घर, वो लोग क्या बोलेंगे? They're much worried about the whole kinship, not just worried about themselves, they're worried about the family and the kinship. Anything, they will not do anything है कि परिवार का नाम मिट्टी में मिला रहे हो, खानदान का नाम मिट्टी में मिला रहे हो. This mentality is coming from that period. So family and kinship was central to the lives of the people. Monarchy was firmly rooted in the society. Monarchy, king, whatever king says, a king was believed to be divinely ordained. Divinely ordained का मतलब क्या है? King was considered as someone who has the moral authority to rule because God had sent them to rule. नॉर्थ कोरिया के बारे में तुम लोगों ने पढ़ा होगा. इन नॉर्थ कोरिया, दिस किम जोंग उनकी फैमिली, उनके लिए स्टोरीज क्या बनाते हैं कि सम, इससे पहले उनका जो फादर थे, ही was born on clouds. He is not an ordinary normal citizen. He he was born on clouds, and the present one, he has born on the mountains which are unclimbable, the famous mountain there. So he has taken birth there. तो या फिर हम लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, अशोक calling himself Priyadasi, or they are calling themselves as god of sun, Devapriya, वगैरह वगैरह. So this whole idea was कि rulers, the kings, their whole lineage is divine, and the god has sent them to rule. So whatever they say is the rule. Rising against the king is like rising against the god. तुम अगर किंग के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हो, उसका मतलब तुम भगवान के अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हो. सो दिस होल थिंग वाज चैलेंज्ड एंड यूरोप चेंज्ड. कैसे चेंज हो जाता है? Each and every central feature of old Europe was challenged. After these two revolutions, French and Industrial Revolution, each and every aspect was challenged. क्या होता है? Religion no longer remains the central pillar. Everybody started questioning religion. It's lost its position. Family loyalties were replaced by ideological commitments. So think about India during freedom struggle. क्या करते हैं भगत सिंह? ठीक है, फैमिली इज on one other hand, but my ideology, whatever his ideology is, his ideology for independence or communism or socialism is more important than family. So ऐसे ही वहां भी ideological commitments of capitalism, of socialism, they became more important for the people. They were ready to break the bonds of family and kinship. They were not no longer hold back by those commitments. And monarchy was overthrown and democracy was
established and women's position also changed. तो हम क्या देखते हैं, एक बहुत स्टार्क चेंज देखते हैं फ्रॉम प्रेजेंट टू पास्ट. अगर तुमसे कहा जाए कि डिफाइन मॉडर्निटी, व्हाट इज मॉडर्निटी, दिस इज अ गुड एग्जाम, गुड डेफिनेशन ऑफ मॉडर्निटी. देखो ऐसे तो देर इज ऑल सोसाइटी इज इवॉल्विंग ऑलवेज. आज भी बदल रहा है, कल कुछ और हो जाएगा. इट वाज नॉट लाइक कि ड्यूरिंग फ्यूडल सिस्टम दे वर स्टैग्नेंट एंड नो न्यू इनोवेशंस आर हैपनिंग. एवरी डे सम न्यू इनोवेशन विल बी हैपनिंग. बट हाउ वी से कि नाउ वी हैव बिकम मॉडर्न व्हेन देयर इज अ क्लियर स्टार्क चेंज. इतना बड़ा चेंज आ जाए कि इट्स क्लियरली विजिबल कि नहीं भाई वो तो कुछ और थे, हम अब कुछ और हो गए. तब हम कहते हैं कि मॉडर्न हो गए. Modernity has arrived. So this is the modern Europe which has broken from its past and created a completely contrasting future or present. This is your task. ये करके आना है कल क्लास में. आज थोड़ा सा कंडीशंस देखते हैं कि what was happening, social conditions in which sociology emerged. देखो sociology, as we discussed in the previous class, everybody was trying to find the solution. What is life? How to solve? How to get rid of sorrow? It was not that the first time somebody tried to understand society. Like what is important in sociology is this period is this word logic, science. In this time we will see that people were not treating sociology as philosophy. Somebody will sit in his cave and meditate upon the god and will get the answer of all the problems of the life. No, sociology is not that. Sociology was imagined as a science which can give suggestions, which can solve the actual problems of the society based upon scientific reasoning, based upon observable data. तो ये है sociology. And this sociology, we can say, is the science of industrial society. इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसे डेवलप हुई, उसमें क्या चेंजेस आए, उसको समझने के लिए सोशियोलॉजी इमर्ज्ड एज अ डिस्टिंक्ट साइंस इन 19th सेंचुरी यूरोप. सो फर्स्ट, अब हम पूरा जो हिस्ट्री पढ़ेंगे वी विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, रिनेसेंस एंड इनलाइटनमेंट. इन रिनेसेंस वी हैव टू थिंग्स. देखो ये क्रोनोलॉजी पढ़ना ना बहुत जरूरी है. मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई हैव सीन teachers not teaching the chronology, not emphasizing on the chronology, and students also not trying to understand the chronology and sequence of things which are happening. तो क्या होता है, यूपीएससी विल आस्क यू कि राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनलाइटनमेंट पीरियड इनटू द राइज in the rise of sociology or emergence of sociology, and people will end up writing everything that they know. क्या होता है सोशियोलॉजी के आंसर में, स्पेशली इस चैप्टर के आंसर में क्या होता है कि तुम लोगों ने वो कहानी सुनी है ना ऑफ हनुमान जी, बजरंग बली लक्ष्मण को जब तीर लग गया है और संजीवनी बूटी लाने के लिए हनुमान जी गए हैं. सुना है सबने कहानी, हनुमान लिफ्टिंग द माउंटेन. तो क्या होता है जब आंसर लिखते हैं लोग, तो इंस्टेड ऑफ आंसर का काम क्या है, आंसर इज आस्किंग यू, राम जी इज आस्किंग यू कि गिव मी द संजीवनी. लेकिन हमारे स्टूडेंट बन जाते हैं बजरंग बली, और वो जो जानते हैं सब ला के रख देते हैं. देख भाई, इन इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी आई हैव रेड ऑल दीज थिंग्स, यू पिक वट एवर यू वांट. तुम इसमें से संजीवनी बूटी ढूंढ लो, तुम अपना आंसर ढूंढ लो. And this happens because they do not read the chronology. They do not emphasize on the fact that what specifically happened in Renaissance and what specifically happened in Enlightenment. That's the most important part. समझे, संजीवनी बूटी देना है
पहाड़ उखाड़ के नहीं लाना है कि तुम आंसर ढूंढ लो, वो वाला काम मत करो. Renaissance and Enlightenment. In Renaissance, we will reach two revolutions: commercial revolution and scientific revolution. In Enlightenment period, we will reach two revolutions: French Revolution and Industrial Revolution. So this is the sequence. Okay? And sociology will emerge after all this. पोस्ट इनलाइटनमेंट पीरियड में आके सोशियोलॉजी सब्जेक्ट बनेगा. इंडस्ट्री, फ्रेंच रिवॉल्यूशन का टाइम किसी को पता है? व्हेन डिड फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैपेंड? ये दोनों तो मान लो तुम्हें नहीं पता होगा. फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मोनिका? 1850. फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब पूरे हिस्ट्री में अगर सबसे कुछ आसान है याद करना तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन का डेट याद रखना है. 789. फ्रेंच रिवॉल्यूशन हैपेंड इन 1789. सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब होता है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन 1850s मान सकते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है. यू विल रीड अबाउट दैट, इफ यू डू नॉट नो डोंट वरी. सो 1850s के आसपास इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है. एंड सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इमर्ज्ड only after this as a discipline. It was established as a subject in late 19th century. तो 1890s के आसपास जाके ये सब्जेक्ट का इसको फाइनली दर्जा मिलता है. इट गॉट recognized as a subject, started being taught, and that's why we see कि all these things, commercial revolution, scientific revolution, French and industrial revolution, all of these things have impact on emergence of sociology. और बाद में कुछ पोस्ट इनलाइटनमेंट चीजें भी होती हैं विच एडेड टू द इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी. सो ये सब चीजों को हम देखेंगे अभी वन बाय वन. लेट्स स्टार्ट विथ कमर्शियल रिवॉल्यूशन. द टाइम इज 1450 to approximately 1800. So it's a very long revolution. काफी लंबा टाइम तक चला है कमर्शियल रिवॉल्यूशन. 1450 से स्टार्ट हो जाता है. क्या है, इफ you know a little bit about ancient history, so this was your Europe, this was your Greece, टर्की, ये पूरा यहाँ पे इंडिया एंड चाइना, थोड़ा रफली अगर देखें तो दिस इज योर ब्रिटेन. यहाँ पे है टर्की, कॉन्स्टेंटिनोपल. If you'll see the map, Constantinople is very brief passes between Europe, very brief linkage between the Europe and एशिया. किसी ने देखा है कॉन्स्टेंटिनोपल का पोजीशन? ये है तुम्हारा यूरोप. और you probably have heard about Silk Route and all. So as slowly we were in the time of feudal system, एंड वी रेड कि फ्यूडल सिस्टम धीरे धीरे अब डिक्लाइन हो रहा है. बाय द टाइम ऑफ 1500 के अराउंड फ्यूडल सिस्टम विल एंड. इन फ्यूडल सिस्टम में क्या हो रहा था? सर्व्स वेर बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड वेसल्स वेर गेटिंग रिच एंड रिच एंड रिच बाय डे. अब वेसल्स के पास बहुत पैसा होगा तो ये क्या करेंगे?
If anybody will have a lot of money, they will spend it. Where they will spend? They will spend on clothes. तुम लोग भी खरीदते होगे, जारा का सेल लगेगा और किसका किसका सेल लगता है. So they will buy clothes. And you have probably read in history and all कि यूरोप emerged as a center for Indian spices and Chinese silk. काफी एक्सपेंस डिमांड होने लगा इन दोनों प्रोडक्ट्स का. The consumer was this upper class because they have immense wealth. They were buying it at extraordinary prices. जो लाना है लाओ लेकिन लेके आओ. But the problem was that in Turkey, if you have to go from France, from Italy to India or to China, you can only go through this passage. And here in Turkey, in Constantinople, this was at this time, this is being ruled by Muslim rulers. And they had put hefty taxes. पैसेज कोई भी इधर से जाएगा तो बहुत टैक्स देना पड़ेगा. और बाद में जब इनका वो होता है, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इटली दे कंट्रोल दिस रीजन एंड दे हैव मोनोपोलाइज्ड द ट्रेड रूट. इस तरह किसी को भी जाना है, यू हैव टू पे टैक्स टू द इटली. इफ यू विल नॉट पे, you cannot go. So Italy has a kind of monopoly over this trade. To get rid of this Italian monopoly, you have to do something. You have to find some idea. And the idea came in the form of the discovery of sea routes. तुम लोगों ने सुना होगा. So what happened first? Portugal and Spain, इनको लगा कि भाई हम इतना ट्रेवल करके जाते हैं, इट्स वेरी लॉन्ग एंड मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स दैट यू आर मेकिंग इज टेकन बाय इटली. सो दे सेड कि लेट्स गो फाइंड सी रूट टू इंडिया. कहाँ जाना था? इंडिया. किसको जाना था? वास्को डिगामा एंड कोलंबस. Both of them set their sails to reach India. Columbus was an idiot, a real idiot, very poor in mathematics. So at the time when they set sail to India, Columbus ने कहा कि देखो, he basically missed the calculation of the diameter or the circumference of Earth. उसने जो mathematical calculation किया, as per that Earth is a very small sphere. So if he will start from here, he will simply come to India because there is nothing in between. जबकि उस टाइम पे हमारे इंडिया में सन में कल पढ़ा कि वी वर कैलकुलेटिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ प्रिसाइसली अप टू द डेसिमल पॉइंट्स. लेकिन कोलंबस को उससे फर्क नहीं पड़ता, उसने कहा कि मैं जाऊंगा और सीधा इंडिया में निकलूंगा उस पार. वास्को डी गामा टुक द लॉन्ग रूट एंड इफ यू हैव रेड, ही क्रॉस द अफ्रीका, केप ऑफ गुड होप. और वास्को डी गामा पूरा इधर से ट्रेवल होके नीचे से इधर से होके इंडिया पहुंचता है. और कोलंबस इंडिया के लिए चलता है एंड ही रीच्ड अमेरिका, वेस्ट इंडीज. सो व्हेन these two countries developed the sea route, they incidentally, by गलती से, they landed upon a gold mine. गोल्ड माइन इन द सेंस कि खजाना, इंडिया का खजाना मिल गया वास्को डिगामा को और कोलंबस को मिल गया पूरा अमेरिका. And they started exploiting both these regions. They exploited so much that Portugal and Spain now became the richest countries in whole of Europe. So Italian monopoly खत्म होके पोर्तुगाल और स्पेन की मोनोपोली आ जाती है.
and but they were not able to maintain this monopoly for long or duopoly for long. क्या होता है, slowly Denmark and Netherlands, they were able to develop much superior navy, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी वो डेवलप करते हैं, and they challenge the position of Portugal and Spain. And after the rise of Denmark, we will read this in detail. यूनाइटेड किंगडम को समझ में आता है कि अच्छा, इन दिस टाइम यू वी नीड नेवी, एंड यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस आल्सो वर एबल टू डेवलप big navies, and that's how the whole colonization process started. तो कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे क्या हुआ, पूरा एक रिवॉल्यूशनाइज हो गया. अभी तक यूरोप जहाँ पे कि ट्रेड नहीं होता था, ट्रेड वाज ऑलमोस्ट निग्लेजिबल, देयर वाज नो सरप्लस, but now there was a lot of things to buy and sell, and a new market emerged. So we have read this now. इकोनॉमिक पावर, पुर्तगाल, स्पेन, हॉलैंड, इंग्लैंड राइज करते हैं. इटालियन मोनोपोली व चैलेंज, लैंड रूट को हटा के दे फाइंड सम, द शिफ्ट बिगेन फ्रॉम लैंड रूट टू द सी रूट. वास्को डी गामा एंड कोलंबस discovered Africa and India. Because of this, commerce expanded into a world enterprise. देखो, कॉमर्स कॉमर्स में इसको कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन बोल रहे हैं. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और कॉमर्शियलाइजेशन में क्या अंतर है? जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स, इंडस्ट्रियल और कॉमर्शियल में क्या अंतर है? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट योर हिस्टोरिकल नॉलेज, लेकिन अगर बोला जाए कि कुछ कॉमर्शियल है या इंडस्ट्रियल है, तो क्या अंतर है दोनों में? When you engage into commerce, so when you engage into commerce, you are not actually producing anything. If I am a commercial person, what I will essentially do is I will buy things from one person and sell it to other person, and I will buy it from there and sell it to other person. तो मैं buying and selling के business में हूँ, तो मैं commercial आदमी हूँ. लेकिन जब मैं industrial हो जाऊंगा तो I will start producing. तो ये कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन है. इन दिस टाइम दीज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन द कॉमर्स, दे आर एक्चुअली नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग. व्हाट दे आर डूइंग, there is a huge demand, there is a huge demand for things like spices, textiles, tobacco, cocoa, chocolate, and they are buying these things and selling into Europe. So as commercial revolution progressed, the position of Portugal and Spain declined, and England, Holland, France became dominant. क्या रीजंस थे इसके? फर्स्ट इज एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग. सम फीचर्स ऑफ रिवॉल्यूशन, कमर्शियल रिवॉल्यूशन समझते हैं. एक्सपेंशन ऑफ बैंकिंग. फर्स्ट thing that contributed into expansion of commercial revolution is credit facility. If you have to buy a lot of things from India and sell into Europe, you first need capital for that. So a well-established credit system developed in Europe. बहुत बड़े बड़े banks emerge होने लगे. Those who were actively financing such activities. Check was invented. This was the period when check was invented and paper money replaced gold or silver coins. इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? चेक. तुम लोगों ने हुंडी पढ़ा है? हुंडी क्या होता है? हुंडी सिस्टम. UPSC asked this question in 2019, I think, in prelims. It is हुंडी सिस्टम. एनसीईआरटी में पढ़ेंगे 6-7 की. एनसीईआरटी हिस्ट्री में शायद क्या है.
इंडिया में क्या होता था, बिल ऑफ एक्सचेंज, इंडिया में क्या होता था, थिंक अबाउट दिस, अ पर्सन फ्रॉम पटना has has to sell his textiles to Britain. He will bring all his textiles to the port at Gujarat, Surat, and from there it will be sent there. Now, when he is going back to Patna, there are chances that somebody will loot all his money. क्योंकि वो आया था सामान लेके, पैसा लेके जा रहा है, लूट लिया, बात खत्म. The trade was very risky. To avoid this, the bankers come up with the idea of hundi system. इसमें क्या करते थे? So this trader from Patna will come to Surat. He will sell his goods, take the money, and will give it to a banker here. This banker will give him a authentication paper that I have taken 10,000 rupees from this person, and his name is this, and he has this mark on his face, and his father's name is this, and this is his location, and these are the people in presence of which he is giving me the money, वगैरह वगैरह इस पे लिख दिया. Now this person can fearlessly carry this hundi, go to Patna, and encash the money. Now, this network of hundi system was so strong at that time that Indian bankers, they have branches as far as Belgium. बेल्जियम में भी इनके हुंडी सिस्टम होता है. अगर तुमको अपना बेल्जियम में भी तुमको पैसा चाहिए, यू सबमिट योर मनी हियर एंड यू कैन विड्रॉ इन बेल्जियम. अभी एसबीआई का भी इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है शायद. So this was the benefit of check. When check got invented, it make this commercialization very easy or safe. तीन और बहुत मेजर डेवलपमेंट होते हैं. राइज ऑफ रेगुलेटेड कंपनीज, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एंड चार्टर्ड कंपनीज. तुम लोगों ने हिस्ट्री में सुन पढ़ा होगा रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट वगैरह वगैरह. So before this, the companies were either, though the people who were going for commercial activities, they were individuals, loan sharks. वो 10 लोगों को जमा करेंगे, अपने दोस्त लोगों को या साथी लोगों को, कहेंगे चलो यार चलते हैं. कोई एक आदमी इन्वेस्ट करेगा या कोई बड़ा राजा इन्वेस्ट करेगा. So this has a limited potential to grow. But when regulating companies came into being, तो राजा अब इन्वेस्ट कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है उसको इन अ रेगुलेटेड वे कि दिस पीपल विल गो, यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू ब्रिंग दिस थिंग्स, रेगुलेटिंग कंपनीज. एंड दिस गेव एन अपर हैंड इन द इनिशियल टाइम टू द एरियाज लाइक हॉलैंड, फिनलैंड, नीदरलैंड में सबसे पहले ये ज्वाइंट स्टॉक और रेगुलेटेड कंपनी स्टार्ट होते हैं इन 16th सेंचुरी, 1500 समथिंग में. देन केम द ज्वाइंट स्टॉक. आजकल जो स्टॉक मार्केट का सिस्टम पूरा है, दैट इसमें क्या है, रेगुलेटेड है. few people will put their money, few known individuals. Now this is a joint stock. Whosoever want to invest in this company, they can invest, and this company will be formed and it will go to different lands. They will do the trade, come back, and the profit will be divided into those स्टॉक होल्डर्स. तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी ऐसी ही एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी थी विच वाज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन, इन विच a lot of common people of Britain has put their money, and तब वो आगे ट्रेड करती है. ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एंड देन चार्टर्ड कंपनीज. चार्टर्ड कंपनीज में क्या होता है, these companies will take a charter, or you can say a permission, a guarantee from the king that only I will trade in this region. यहाँ पे क्या है, in this period there is this idea that if you have to generate earn profit, you can earn profit only in a monopoly. अगर तुमको ट्रेड करना है तो तुम सिर्फ और प्रॉफिट कमाना है तो यू कैन ओनली अर्न प्रॉफिट इन अ मोनोपोली.
इफ देर इज अनदर कंपटीटर यू कैन नॉट अर्न प्रॉफिट. बट हमारे यहाँ आज के टाइम पे क्या होता है, इन दिल्ली nobody is worried about opening of a new coaching institution there. और मुझे भी खोलना है तो मैं ऐसा जाके बिहार के किसी छोटे से गांव में नहीं खोलूंगा जहां पे कि कोई कोचिंग वाला नहीं हो. मैं भी दिल्ली जाके ही खोलूंगा बिकॉज देयर इज द मार्केट नाउ. मोनोपोलिस्टिक मार्केटिंग इज नॉट द वे. बट वहां पे क्या होता था, वाई मोनोपोली वॉज देयर, बिकॉज ट्रेड वॉज वेरी रिस्की. वहां पे तुम 2%, 4%, 10% प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर सकते हो. इफ somebody इज इन्वेस्टिंग 1 लाख रुपीज, देर प्रॉब्ली इमेजिनिंग 10 करोड़ रुपीज प्रॉफिट. 100 टाइम्स, 500 टाइम्स, 10 100 टाइम्स जब तक नहीं आएगा, बिकॉज the journey of the sea was so risky. Almost 50% people will lost their life when they're coming from Europe to India and going back from here to there. And still these people are taking risk. तो इनको चाहिए था कि हम ही सिर्फ बिजनेस करें, हम बेचें, एंड when we go back to Europe, only we can sell our product at whatever price we say. And in order to do that, they used to take the permission of the king. और इसको कहते थे चार्टर सिस्टम. तो वो पहले चार्टर दे देगा, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन मिलता है कि ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी विल ट्रेड इन द ईस्ट ऑफ ब्रिटेन. तो ब्रिटेन के ईस्ट में कोई भी कंट्री है उसके साथ अगर ट्रेड करना है तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करेगी. तो ऐसी चार्टर्ड कंपनीज इवॉल्व होती हैं इन 17th सेंचुरी. Now, rise of new class, very important, last topic and we will end with it then. राइज ऑफ न्यू क्लास. देखो, ये लोग जो आ रहे थे इतना रिस्क लेके यूरोप से इंडिया या चाइना ट्रेड करने, व्हाट काइंड ऑफ पीपल दिस वुड बी. ये अपर क्लास के लोग होंगे या लोअर क्लास के लोग होंगे? कौन लोग इतना रिस्क लेकर आएगा? 50-50 ऑड है, यू कैन लिव और डाई. Rich people will not take this risk, right? This kind of risk will be taken by only the people who are either very adventurous or the people whose life is like कि हम तो यहाँ पे मर ही रहे हैं तो वहीं जाके मर जाए, जिनके पास कुछ भी नहीं था. तो the poor people were mostly engaged in these selling activities. Selling मतलब सेलिंग, आना वाला, सेल नहीं, सेलिंग एक्टिविटीज. So, but with time, because of this huge economic profit, जो मर गए वो तो मर गए, लेकिन those who made even 1 or 2 journeys in their lifetime, they got immensely rich. And with that, a new middle class came into existence. एक नया क्लास ही इमर्ज हो जाता है. पहले तो सिर्फ सर्फ्स थे, अब यही सर्फ्स जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था, these serf now has money and sometimes even more money than the vessels themselves. So they became the economic might, economic powerhouse of this 17th century European society. But इकोनॉमिक पावर तो इनके पास बहुत आ गया. क्या होता है, किसी बिजनेस के पास मैन के पास बहुत पैसा आ जाएगा तो वो क्या करता है, वो पॉलिटिकल पावर चाहिए, चुनाव लड़ेगा, है ना, फंड करेगा. सो दे हैव अ लॉट ऑफ economic power but no political power. And that's why we will see later in French Revolution, this new middle class will rise against the upper class to gain the political power, and they will bring democracy, remove monarchy. ठीक है, यही पूरा आइडिया है इसमें. एक जो लास्ट स्टेटमेंट है बहुत ही कंट्रोवर्शियल, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाओगे तो समझ में आ जाएगा. दिस पीरियड सॉ द स्ट्रेंथनिंग ऑफ मोनार्की एंड डिक्लाइन ऑफ चर्च.
and rise of middle class. Now, sometimes people will get confused with this statement कि this period saw the right strengthening of monarchy. एक तरफ हम कह रहे हैं कि मोनार्की को हटा के डेमोक्रेसी ले आए, पर दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि मोनार्की गॉट स्ट्रेंथेंड. Can any of you, like I have told you the reason, but if you can find that and relate कि why monarchy got strengthened in this period? मोनार्की स्ट्रॉन्ग क्यों हो रहा है कॉमर्शियल रिवॉल्यूशन के टाइम में? एनी वन, एनी आइडिया? देखो, पहले क्या था फ्यूडल सोसाइटी में? नो सेंट्रल अथॉरिटी, किंग वाज वीक. व्हाई किंग वाज वीक? ही हैज नो इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स. जो वेसल देंगे उसमें खुश रहो भाई. तुम बस हेरिडेटरी, तुम भगवान ने रूल करने के लिए भेजा है, तुम रूल करो, बट इकोनॉमिक पावर इज विथ वेसल्स. But with the coming of chartered companies, joint stock companies, with the rise in trade and commerce, किंग अभी जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर चार्टर मिलना है तो किंग यूज टू बी हेफ्टली ब्राइब्ड, और दे यूज टू हैव देयर ओन कमीशंस, टैक्सेस to give these licenses to the chartered companies. So now kings have their own source of money. और पैसा आ गया तो, पैसा आ गया तो पावर आ जाएगा. So monarchy got strengthened. The religion was declining, so role of church got declined, and middle class became stronger. And this was the process of starting of Europeanization. Wherever they went, they colonized those countries and make them look like Europe. Next class में आकर पढ़ते हैं scientific revolution in Renaissance period. समझ में आ रहा है क्लास? ज्यादा दिमाग पे जोर तो नहीं पड़ रहा है? ठीक था, इंटरेस्टिंग है. चलो, ठीक है, चलो. आई विल इन्फॉर्म यू अबाउट yesterday's class. Maybe there is some festival, I think. Some of the students have requested to not take classes. मैं कल तुम्हें दिन में 12 बजे तक बता दूंगा कि क्या करना है. ठीक है? एंड यस सर प्लीज. हाँ, तो मैं कल बता दूंगा कि क्या करना है. एंड कीप चेकिंग योर टेलीग्राम ग्रुप. चलो, बाय. कुछ पूछना है बताओ. सर, इज इट रिकॉर्डेड दिस क्लास? It is being recorded. Yeah. चलो. Lots of new things learned. कुछ लोगों को न्यू थिंग्स नहीं मिले होंगे. सम ऑफ यू माइट हैव रेड ऑल दीज, बट आई थिंक आई वाज एबल टू प्रोड्यूस ऑल दैट नॉलेज इन अ सिंक्रोनाइज्ड फॉर्म. एक थ्रेड बन गया होगा एटलीस्ट तुमने जो अभी तक पढ़ा होगा. क्या मनिका? अभी भी मुझे लगता है कि सब कुछ तो मोस्ट ऑफ द चीजें पढ़ी हुई होंगी, लेकिन अब सब एक थ्रेड में आ गया हो कि अच्छा ऐसे ऐसे इसके रीजन से अब उसके पीछे की सोशियोलॉजी समझ में आ रही हो कि अच्छा इसके कारण ये हो रहा है. इससे पहले ये हिस्ट्री था. So that's the purpose of this class. Everybody knows sociology. मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ कि sociology is something that is known by everyone, known to everyone. Good. हाँ हाँ, मैं नोट शेयर करता हूँ. चलो, ठीक है.